Okay, started. Okay, let me start the screen share. Okay. Okay. So today agenda, as I told you in the comment, like I will try to try to start do the setup for React and Node.js. Then I will Yeah. create one React app, two Node.js services, and I Yeah. will call the post get services using Node.js, fetch those data to Hmm. React and show in one app. So Okay. the application would be similar to Hmm. this. Like we will have one React app and we will have two post service. Why I am doing this? It is a kind of a mini project to tell you like how React and Node.js work, and then we will Yeah. we will see the problems. Like if we have this kind of structure and we are, I mean, do you have any knowledge regarding microservices? Like what is a microservice? I have this knowledge is that when number of means up means there is one total service which is commanded with several small services. Hmm. In one of them means in my current company there is one means this is the procedure I have just went through, but I haven't done means architectured by myself, so I haven't that proper knowledge, I can say. Yeah, so if we talk about the microservice, many Yeah. people think like, okay, breaking a big application into small services Services. will make it as a microservice, right? But this Yeah. is the wrong thinking which they have. Okay, if you only blindly create some application Yeah. and break those application without giving much thinking, without utilizing the 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 base structure, the base properties of the microservices, you Yeah. end up creating an application Yeah. which would be 10 times heavier than what it would run on monolithic application. Okay, Yeah. so for this class, for this weekend class, I would say today and tomorrow, I will first create these three things: one React application and two services. Yeah. Okay, two separate services. And by saying Okay. this, people may call, okay, I mean, it's a microservice architecture because you are creating a backend into different services. But at the end Yeah. of the class, I will show you, like if you don't have a architectural knowledge, or if you don't follow those the rule and regulation which microservice have, you will end Mm. up uh, falling. I mean you will create a worst application of your life. Okay. So Yeah. first I Yeah. will create this application. By creating Yeah. this, we will gain the knowledge like how to create a React application, how to create a Node.js application, then how to create the routing in the application, and how we can Mm-hmm. call the different features, or the different APIs, okay, within the Okay. services. and Okay. and then we see like what kind of problem we will we will face if we have done that thing. Earlier on, Okay. what happened, when it was on monolithic application, this Yeah. the both of these services would be a single service, right? A single application. I mean, Yes. there were separate application for front end and separate application for the back end. Then what, in microservice, what happened, they divide those application into the different services, okay, which we call as a service, based on their functionality. And then in between those, there should be something, right, which bind them, which make Yeah. them work together. Okay, so those things we will learn later on, whether it's a Kubernetes, whether it's anything else. Okay, event bus and those kind of things we will learn Yeah. slowly. But for today agenda, we will create these three application. I would call as an application because Yeah. these three thing will run standalone, will run on different port, will can run without, don't have any dependency on one another. but Yeah. but at the end of a class, we see the problems, like what kind of problem we might face if we don't uh, follow the best practices in microservices. Okay. 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 Okay, first of all, we have three applications. So what I will do, I will come here.
Uh, let me close this thing. So, Let me close everything. Okay. I had put everything in this repo. Let me show you. Okay, if you go here, you will come here. You will get all the previous files. Okay. So what I okay. will do, I will create a new branch here, and then I will put my code into that branch. So if you are using this VS code, you can create a new branch through this. First, let me pull all my code so Yeah. that my code gets synced with my repository. Okay. Then Yes. what I will do? I will create a new branch. So how you can create a new branch? In bottom, once you download your file and import in the VS code, you Yeah. will get this option. Okay. So what I had done, I had login into my GitHub account. Okay, that has been done, and then I had pulled this code in this repo. Yeah. Okay. Now what I will do, I will create a new branch. For new branch, you have to click here, then choose this option, create new branch from. Okay. Uh, Today's date are 16 March. So I will give 16 March class. So this is my new branch where I will have all my codes. And from where I will, please provide a new branch name. Okay, 16 March class. Right. Okay. Did I done any mistake? Let me do it again. Okay. Select Sir, you branch, can create do branch here from. by command. Sir, you Yeah. can do Okay. by Yeah. command. Yeah. Sorry. Can you repeat again? Sir, you can do by command line means git checkout minus b, Yeah. Yeah. then Yeah. You can do it with it, that way also. Okay. March 16 classes. Okay. So this March 16 classes is our new branch. Okay. But yes, sir. yeah, everything you can do it from command line. But now what I'm trying to do, I will not use any command line. I will do everything to the VS Code features only. Okay. So you can see my new branch has been created, Hmm. Hmm. and but when I come here, I cannot see that branch. I can see only two branch, main and bootstrap template. Yeah, These two branch are there. Why? Because I have just created this branch. I haven't published this branch. Okay. So to yeah, publish this branch, you have to click here. Or else, if you click on this source repository option, hmm. you will get this option to publish Achha. this branch. So either you can click here or you can click this bottom sign. Okay. Let Okay. me click this. When I click this Mars 16 class will get, mean with this name, a new branch will get created. Okay. So you can see this is our today's class. Whatever code Yes. I will write here, I will write here. Okay. Why I Okay. have why I have tell you this? You should also have basic knowledge of this also, because Hmm. this kind of thing are very, I mean, you should know. Okay. Yeah. Okay. Then what I will do, I will come here and create one folder, new Okay. folder, same March 16. Okay. Great. So this is our folders. Okay. Now, as I explained you earlier, like today agenda is to create three application. One with React, Yeah. which will be our front end, and Yeah. two would be our services. One service is a post service, and second one is a comment service. So what I am trying to do through this post service,
I will Hello. create the post. I will write an API to She create the said, post and list all the posts. And in comment service, I will write two API. One is to create the comment, and second is to list the comment. Okay. And then at the end of the day, by utilizing this thing, utilizing everything, I will create an application something like this. Like we will have a form where I will give some data, submit those data, those and yeah, through post service, I will create the post. Then yeah, on bottom of it, I will have another service which will provide me the list of the post. And again, to each post, some comment will be attached, so we can create the comment and list those comments. So this thing we will try to create, and then see uh, like by doing by only by dividing our application into small services, whether it's helpful to us or it will harm our application or it would create yeah. a Sir, I disaster. have a just sir, I have a just question. Just Yes. can you means repeat that part means comment section? I didn't understood that one. Yeah, I mean, my motto is to create an application Yeah. something like this, okay, where Okay. I mean this portion would be rendered through React. Okay. So in Okay. React, I will have one section through which I will create the post. Okay. So whenever I will create the post, it will call the post service to create the post. Okay. Okay. And Okay. then Okay. this the post list which you see blue section, Yeah. Yeah. post one, my post number two, those will Yeah. render through the second service, that is the post list service. Okay. So this post list and post create are within post service, and comment list and comment create are within the comment service hour. Okay. So Okay. each of the post within each post there can be a multiple comment, those can be attached within it. Okay. So we will fetch those data through this comment list API within comment service, and then we can create a comment uh, for that post by using this comment gets API. Okay, Sir, which is sir, I want to ask you here yeah. is that why do we need separate services for post list and post create? See, our motto is to create a microservice. Okay, so that's To why. I mimic mean, that, so that we can for the means as we want to mimic a microservice, that's why you want to separate the services for a particular post. Am I yes, right, sir? yes. Since microservice architecture follow this kind of rule, but with certain features, with I would say those features which able to help communication between those service and bind those service. Okay, so those kind of thing will come. So this is just an ABC, like how we create our microservice based application, or how microservice based application look from outside, not from inside, but Yeah. how it work actually. It will Okay. have different application which can run Yeah. standalone. Okay. Then Yeah. Yeah. we bind them, then we utilize the features of cloud. Okay. Features of many other thing to bind them to work together, to to overcome the difficulties which we will see in upcoming time. Okay. When we complete this thing, we will see we have, instead of making this application simpler, we have Yeah. fall in a trap and we had made a bigger application. Yeah. Okay. Sure, sir. Yes. और Sure, sir. microservice में यही है, microservice we make a big application. It Yeah. is not very good for a very small project. it is Yeah. it is highly recommended for a Mm. big project. ठीक है. तो एक Yeah. छोटा प्रोजेक्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे, देखेंगे बहुत सारा हम लोग प्रॉब्लम मिल रहा है. So Yeah. with Yeah. that problem we will resolve tho- those and able to learn this thing. क्योंकि Okay. देखिए, if you are in development, आप Yeah. जितना theory से नहीं पढ़ सकते उतना ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग से पढ़ सकते हैं. If you see the problem, Exactly. you will get the solution and you will learn from that. Okay. Sure, sir. तो हम्म, तो अगर अगर हम किस कोई और है, whether anybody else is here.
Let me see. Yeah, yeah, So custom, yeah, custom. Can you, okay, call and custom. Yeah, custom. Can you? I could not see the screen. I always find this thing, this problem. just leave. Mhm. Okay, custom. Do you have any knowledge regarding microservice? What is microservice? Microservice, as I know, Hmm. that microservice actually, there is a different system. Okay, different system run different services. Okay, and we can Okay. collaborate the service into one system and we run it. Okay, suppose as you have shown to us that UI actually running by another one system. Okay, the backend code is running by another one system. Okay. So that so that any kinds of code error or any kinds of bug will happen, this Hmm. will not completely create exceptions for the whole application. Okay, so the suppose the backend service is running by another one system. Okay, so the backend engineer will solve this issue and fix this issue. Okay, at the same time the front end part is being deployed and is being running by another one system. Okay, so Okay. this is the main funda. Okay. If I show you this diagram, if I will tell you, the same thing is happening here. I have my app which is using React, and it is running standalone, right? It has some post service which is running standalone. It has some comment service which is running standalone, and whatever thing you are telling, like this comment will have some other APIs like fetch comment, okay, uh, save comment. Similar for this, it would be have fetch post, save post, and those three are end up in inter. Those three are not interdependent. If my post service fell down, I would not have much problem because this React app should run standalone, and somehow or another, if you had multiple service, then only service related to creating and fetching post will not work, but other service will work. Okay, so by definition, what you are saying, I can show this diagram, but isn't it a microservice? What you are saying, जो तुम कहा, it is मीन वो तो एक तरह का हम कह सकते हैं that is only a top portion of it. Okay, but अंदर में there are multiple thing. सिर्फ only to break our application into multiple application does not make an application into a microservice architecture. ठीक सर है, इसके सर साथ मेरे उसमें क्या मेरे मतलब लोड बैलेंसिंग का एक फैक्टर रहता है? यस, मल्टीपल फैक्टर्स है, इंटीरियर फैक्टर है, लोड बैलेंसिंग, ठीक है। लोड बैलेंसिंग तो आपका सर्वर पे आ जाएगा, दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट इज हाँ, कह सकते हैं कि लोड बैलेंसिंग कह सकते हैं, लेकिन दैट कैन बी अचीव बाय मोनोलिथिक एप्लीकेशन आल्सो। ओके, सो दैट इज नॉट फुल्ली बेस्ड ऑन माइक्रो सर्विस वन, वेब बट इसके सर्वर साथ भी वो हैंडल कर सकता है। वो हैंडल कर सकता है, राइट। हाँ कस्तो यू आर सेइंग समथिंग। हाँ, मेरा जो कहना था, देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक एप्लीकेशन बनाते थे, उसका डेल बेल लेयर ऐसा होता था, नहीं नहीं, ठीक है। आई तो अंडरस्टूड दैट थिंग, आई अंडरस्टूड दैट थिंग, दैट कैन आल्सो, आप जो तुमने जो कहा, मैं इसको मैं 2-3 सर्वर में मैं डिप्लॉय कर दूं, ठीक है, हाँ, सेम एप्लीकेशन को मैं 2-3 सर्वर में डिप्लॉय कर दूं, स्टिल कैन वी कॉल इट एज अ माइक्रो सर्विस? नहीं, नहीं, ठीक है, बिकॉज एक पार्ट को तोड़ना अलग बात है, दैट यू आर नॉट क्रिएटिंग ए माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, दैट यू आर क्रिएटिंग a small monolithic application, ठीक है, लेकिन हाँ, क्योंकि क्योंकि वो आपस में सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। माइक्रो सर्विस का माने क्या हुआ, ठीक है, वो स्टैंड अलोन होगा, वो उसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं होगा, लेकिन इंटरनली हम लोग वो सारे को बाइंड कर सकेंगे। इंटरनली वो कुछ इस तरह से कम्युनिकेट करेगा कि हम लोग का जो कम्युनिकेशन हो, हर वक्त हम लोग HTTP का कॉल नहीं करना पड़ेगा, वो क्लाउड से या का सर्विस का कुछ यूज करके हम लोग स्लोली लर्न करेंगे, ताकि वो सारा एक तरह का मेरे मेरे चेन में रहे। दे आर डिफरेंट, बट वी कैन यूज इट विदाउट मच रिस्ट्रिक्शन। ओके, स्लोली अच्छा स्लोली सर, पढ़ेंगे, देखते हैं, टाइम लगेगा, महीना भर बाद उस जगह सर जाएंगे। एक बात बोले सर, देखिए ये रिएक्ट ऐप जो है वो आपका फ्रंट एंड हो गया, ठीक है। करेक्ट अच्छा करेक्ट सर, दूसरा जो सर्विस है पोस्ट सर्विस, ये आपका सेफ का काम करेगा, ठीक है। करेक्ट। अच्छा,
पोस्ट इस सेव और पोस्ट लिस्ट का काम करेगा। पोस्ट का मतलब, पोस्ट का माने एपीआई का जितना मेरा समझ है वो आपका सेव करता है, ठीक है। नहीं अच्छा, नहीं, ये पोस्ट का माने वो नहीं, ये पोस्ट माने क्या है कि अब जैसे फेसबुक पोस्ट करते हो ना, you do a अच्छा, Facebook post, right? हाँ, So that is a kind of a post, okay? और फेसबुक में आप जैसे कमेंट करते हैं, कमेंट सेक्शन रहा, तो that is that comment section. So what I did, mean just for dummy thing, कि हम लोग एप्लीकेशन बना लेते हैं, हम लोग रिएक्ट का सेटअप देख लेते हैं, हम लोग नोड का सेटअप देख लेते हैं। To understand those things, I have created these three small application, right? 3 एप्लीकेशन बनाएंगे, तीनों का तीनों को स्टैंड अलोन, जैसा माइक्रो सर्विस का आर्किटेक्ट बोलता है कि भाई तीनों स्टैंड अलोन रन करना चाहिए, तीनों का स्टैंड अलोन रन करेंगे, तीनों का सर्विस में भी कम्युनिकेट करके देखेंगे, बट स्टिल हम लोग देखेंगे कि वी आर फेलिंग टू अचीव द माइक्रो सर्विस का जो रूल था, या माइक्रो सर्विस क्यों बना, ताकि हम लोग एप्लीकेशन को आसान बना सके। वी विल सी लाइक एट द एंड ऑफ डे वी हैव पुट मच लोड ऑन द सर्विस, ठीक है। तो प्रॉब्लम जब समझेंगे देन सोल्यूशन के पीछे भागेंगे, एंड देन स्लोली जब एप्लीकेशन करेंगे तो ये ठीक करेंगे, जो प्रॉब्लम को हम लोग एक्चुअली रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट दिस थिंग। तो पहला चीज जैसा आपने बोला कि मेरा इनिशियल सेटअप होगा, मेरा रिएक्ट एप्लीकेशन होगा और 2 मेरा नोड जेएस एप्लीकेशन होगा। तो चलिए रिएक्ट एप्लीकेशन का सेटअप के लिए क्या करेंगे भाई, डू यू नो दिस थिंग? रिएक्ट के लिए पहले भी बताया था आपको, रिएक्ट के लिए जनरेट। हाँ सर, बोलिए बोलिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 3 फोल्डर्स बना लेता हूँ, ठीक है। एक बना अच्छा, लेता हूँ रिएक्ट, या मैं रिएक्ट को फ्रंट एंड लिख दो, जो भी लिखना लिख दिया, ठीक है। तो मैंने फोल्डर बना, अच्छा सॉरी मैंने फाइल बना दिया, लेट मी डिलीट दिस। 16 मार्च फोल्डर फ्रंट एंड, ओके। अंदर में इसी के अंदर एक और फोल्डर पोस्ट, ओके। हाँ, इसके अंदर मार्च के अंदर ही मेरा पोस्ट, और फिर मार्च के अंदर ही मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और फोल्डर कर लेता हूँ कमेंट, ओके। सो ये मेरा फ्रंट एंड एप्लीकेशन होगा और ये दोनों मेरा बैक एंड एप्लीकेशन। नाउ मैं फ्रंट एंड पे मैं चला जाता हूँ, सीरी। चलिए सर, रिएक्ट एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए क्या कमांड लिखते हैं सर? npx create react app, उसके बाद npx create react ऐप npx का नाम npx npx create हाइफन ठीक है। हाइफन, हाँ उसके बाद नाम देना पड़ेगा। अब मैं नाम की जगह डॉट भी दे सकता हूँ, ठीक है। हाँ, डॉट देने से क्या होगा कि जो मेरा नाम है फ्रंट एंड, इसी हम्म, नाम पे ही वो क्रिएट कर हम्म, देगा, ठीक है। ये आप इसी पे ही देखिए, मेरा फ्रंट एंड के अंदर ही ये पैकेज बना के क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये तो पहला मेरा रिएक्ट बन रहा है, रिएक्ट को बनने का मैं यहाँ क्लिक, यहाँ में ऐड करके मल्टीपल टर्मिनल में यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं ये प्लस करता हूँ, एक और टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल में मैं अपना दूसरा सर्विस के लिए स्टार्ट करूँगा। तो रिएक्ट 2 मिनट लेता है, उसे काम कर दे देते हैं। अब फिर हम दूसरे फोल्डर्स में जाएंगे, किसमें? पोस्ट और कमेंट्स में, ठीक है। सीरी मार्च 16 और पोस्ट में गए, ठीक है। अच्छा, नोट के लिए क्या होता है सर? नो npm init npm init। ठीक। सेम, अगर हम डॉट देंगे तो कुछ देने का जरूरत नहीं है, यहाँ डॉट दे देंगे तो वो मेरा बना देगा, अगर हम नहीं देंगे तो उसका नाम लेके बता। अच्छा, डॉट स्टार होता है, चलिए जैसा उसे छोड़ देते हैं। पैकेज नेम पोस्ट ठीक है, वर्जन ठीक है, डिस्क्रिप्शन पोस्ट सर्विस,
इंडेक्स, चलिए इंडेक्स रहने देते हैं। पेस्ट कमांड अभी कुछ नहीं देते हैं, गेट रिपोजिटरी कुछ नहीं देते हैं, चलिए ये करके खत्म। ओके, तो नाउ हम लोग का पोस्ट के लिए package.json जनरेट कर दिया, ठीक है। सेम हम लोग एक और रिपोजिटरी में चले जाते हैं, ये नोट चल रहा है ना, हाँ ये चल रहा है, इसको चलने देते हैं। थर्ड चले जाते हैं कहाँ, हम लोग चले जाते हैं कमेंट्स में, ठीक है। सेम तरह से और यहाँ से कमेंट्स में, ओके। npm init, अच्छा सेम चीज, इंटर, ओके। ना अब हम लोग समझते हैं कि क्या हमको लगेगा इफ वी आर डूइंग दिस। हम लोग अब रिएक्ट पे चले, पहले नोट का कर लेते हैं, रिएक्ट का टाइम ले रहा है, नोट कर लेते हैं। इफ वी वांट टू क्रिएट सम सर्विस, ओके, व्हाट वी नीड, इफ यू वांट टू क्रिएट अ रिएक्ट एप्लीकेशन, हम लोगों ने रिएक्ट का इनिशियल एप्लीकेशन बना लिया, ओके। और अब हम लोग एक फाइल बना लेते हैं, दैट इज, मैंने नाम दिया था index.js, तो दोनों का मैं index.js एक फाइल बना लेता हूँ, ओके। सेम फॉर पोस्ट ऑल्सो, तो पोस्ट के लिए कर लिया, सेम फॉर कमेंट ऑल्सो। वी आर गुड टिल है, राइट। अच्छा Yes, अब sir. बताइए, what we need to create a service in Node.js. What is the Oh, minimum thing that we need to create a service in Node.js? okay. कोई API बनाने के लिए, First we need to install. We can use only Node.js or Express.js as well. So in order to install Express.js, npm install Express. Then we have to create a constructor after importing Express.js. Const app equals that ओके express that ओके that will ओके be. ओके, After या आई that, अंडरस्टैंड। yeah, तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग वी शुड डिसाइड लाइक विच फ्रेमवर्क वी विल यूज, डू वी नीड एनी फ्रेमवर्क और डू वी डोंट, ओके। सो yeah, पहले तो हम लोग को फ्रेमवर्क डिसाइड करना होगा, तो फ्रेमवर्क के लिए हम लोग डिसाइड करते हैं कि चलिए हम लोग एक्सप्रेस पे ही फिलहाल जाते हैं, बिकॉज एक्सप्रेस इज द मोस्ट पॉपुलर वन। तो हम लोग एक्सप्रेस, पहला चीज हम लोग को डिपेंडेंसीज में इंस्टॉल लगेगा, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेस, ओके। सेकेंड थिंग मैं yeah, क्या कर लेता हूँ, अगर मुझे कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल चाहिए, तो हमको इन्वायरमेंट के लिए चाहिए एक डिपेंडेंसी, और थर्ड yeah, हम लोग को चाहिए, अगर हम लोग इसे रन कर रहे हैं और yeah, देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा मल्टीपल शेल रन कर रहा है, और नोड जेएस में अगर हम लोग नोड जेएस का यूं ही रन करेंगे, तो आई हैव yeah. टू रीस्टार्ट द सर्वर अगेन एंड अगेन। तो इस तरह का ना हो कि वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट ले ले, इसके लिए हम लोग नोड मॉन Node, इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। yes, तो हम क्या yes, करते हैं, आई एम इन कमेंट में इंस्टॉल कर लेता हूँ दो चीज, npm it, इंस्टॉल Node one, एक्सप्रेस स्पेस Node नोड मॉन, one. ठीक है। देन जैसा नीड होगा, आई विल वी विल डू दैट थिंग। Yes, sir. अच्छा, दूसरे वाले भी शेल में जा करके पोस्ट में भी सेम काम कर देते हैं, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस स्पेस नोड मोड, ओके। नाउ यू कैन सी बहुत सारा चीज यहाँ पर जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये कमेंट्स के अंदर दोज डिपेंडेंसीज फॉर एक्सप्रेस एंड नोड मोन गॉट इंस्टॉल, और मैं मल्टीपल थिंग कर रहा हूँ ताकि जल्दी थिंक हो Uh, जाए, और ये सब चीज मैंने पुरानी क्लास में आपको बता Sir, चुका हूँ। I have one question. यस यस, Sir, I have worked some of the means a lot of the projects where these node modules becomes quite heavy. Once the that application gets larger and larger. So is it means disadvantage for JavaScript for large scale applications? no, I again told like if you don't know how we should use it and how we should work with it, then even this application you cannot
work perfect. This application could not work perfectly. Okay, No, no, no. so to do, I'm saying that means that node modules becomes too much heavy. Means a lot of thing gets installed. Okay, so that application becomes even much more larger. So is it a disadvantage for the JavaScript? Means I'm not no, no, asking no. on. No. If you create the same application with JavaScript and with Java, okay, the Java Yeah, file size would be always larger. Okay, because okay, those library are very heavier. Means see, every language has its own problem. Okay, and every language yeah, has its own advantages. So yeah, you should know the problem and yeah, use the advantages. That's the main thing. If you can know how can overcome this problem and yeah, use the advantage, then language is just a language. Okay, it's just a way yeah, to communicate your server with yours with your code. So yeah, so it totally depend upon how you write your code. yeah, Okay, okay, and whether to use the nodemon or not. Yeah, there are different tools also which you can use other than this nodemon. uh, yeah. yep. So I will show you. I will show you when I will put this in a server. I will not use the nodemon and still it will work. Okay, because in server we can use, yeah, I have used different thing instead of nodemon. I have used this as a service and it worked perfect. Okay. Okay. Any question here? No, No. not now, sir. Okay. Okay. Acha, what I was trying to do. Let me go there and then सर yes. अच्छा आपने तो हिंदी में बोल रहा हूँ आपने तो हाँ. दो हाँ दो फोल्डर क्रिएट किए सपोज रिएक्ट आपको एक पोस्ट सर्विस के लिए तो मतलब एक एज्यूम करते कि पोस्ट सर्विस के लिए एक फोल्डर क्रिएट किया कमेंट सर्विस के लिए एक फोल्डर क्रिएट किए बाय एज्यूमिंग दैट running a different machine and comment service is running a different okay Correct. Correct. तो ऐसा क्या हो सकता है कि दो एप्लीकेशन मतलब सेपरेट एप्लीकेशन पोस्ट सर्विस के लिए एक सेपरेट एप्लीकेशन एसएलएन फाइल जिसको कहते हैं हम विजुअल स्टूडियो का और एक हम्म, कमेंट के लिए एक सेपरेट एप्लीकेशन दोनों डेवलप हुए ठीक है अब हम्म, दोनों हम्म. इंटरनेटली मतलब हम दोनों एप्लीकेशन को चलाएंगे ठीक है सेपरेटली और इंटरनेटली हम दोनों को कनेक्ट भी करेंगे ऐसा करके क्या माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्रिएट किया जा सकता है देखिए, हाँ, देखिए एक तरह से एक माइक्रो सर्विस जब भी कभी हम लोग सर्विस बनाएंगे, जब भी कभी हम लोग एप्लीकेशन बनाएंगे, इट शुड बी स्टैंड अलोन। उसमें कहा जाता है, बेस्ट प्रैक्टिस है कि ये जो मेरा पोस्ट सर्विस है, इसका किसी तरह से कोई भी डिपेंडेंसी कमेंट सर्विस से नहीं होना चाहिए या ये ऐप सर्विस से नहीं होना चाहिए। इसके अगर हम खाली लेकर के इसे डॉकर में बिल्ड करके कहीं पर भी इसको रन करा दें, इट शुड रन। ओके, इट शुड रन एज इट इज। जैसे मेरा हार्ट है, हार्ट अब किसी का भी हार्ट लेके दूसरे हार्ट में डाल दीजिए, दैट हार्ट शुड स्टार्ट द पंपिंग, राइट। अभी है इंसान का हार्ट लेके दूसरे के इसमें दे दिया, किडनी लेके दूसरे इसमें दे दिया, तो इट शुड बी लाइक दैट कि हम कहीं पर भी डाल दें, व्हाट इट नीड, जो भी इसका एंड पॉइंट है वो चाहिए। इसका डेटा जो कनेक्शन है, डेटाबेस भी इसका इसी के ही अंदर होना चाहिए। इट शुड बी विद इन दैट सर्विस। ओके, ये नहीं कि हम डेटाबेस, एक ही डेटाबेस को हम लोग ये भी यूज कर रहे हैं, ये भी यूज कर रहे हैं, नहीं। वो फॉर परफेक्टली यूटिलाइज द फीचर्स एंड एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो सर्विसेज, इसका जस्ट इन क्या होना चाहिए ये पता होना चाहिए, और इसे आउट क्या चाह रहा है वो पता होना चाहिए। बीच का सारा चीज वो खुद डिसाइड करेगा। यू आर नॉट, और किसी से भी वो इफेक्ट नहीं होगा। इवन इसका डेटाबेस भी अलग कर सकते हैं, इसे अलग मशीन में रन कर सकते हैं, अलग सर्विस में रन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको ऑन अ होल करने के लिए ये सारे को आपको ज्वाइंट कराना पड़ेगा, बाइंड कराना पड़ेगा, एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाना पड़ेगा, तब आपका ये खुद का एक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के अंदर ये पूरा मिल करके एक एप्लीकेशन बनेगा। एल्स ये सिंगल भी खुद एक एप्लीकेशन होगा, इसका अपना अलग डीबी, इसे उठाओ और कहीं पर भी डाल दो, डिप्लॉय कर दो, इट शुड रन एज मीन विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम। उसका जस्ट तुम इनपुट जो देना वो इनपुट दो, वो तुम्हें डिजायर आउटपुट देगा। दिस शुड बी
इट शुड वर्क लाइक दिस। सो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने 3 जो फोल्डर बनाया है, एक्चुअली दीज आर 3 एप्लीकेशन, दीज आर 3 सेपरेट एप्लीकेशन, जिसे मैं जैसे चाहूं वैसे यूज कर सकता हूं। मैं ये पोस्ट को उठा करके कहीं और अगर रन कराऊंगा, द पोस्ट शुड रन, इट शुड नॉट हैव एनी डिपेंडेंसीज फॉर फ्रंट एंड और कमेंट्स। ठीक है, अब सेम फ्रंट एंड को भी मैं जैसे भी उठा के कर दूं, फ्रंट एंड शुड लर्न, हाँ उसको डेटा चाहिए, डेटा शुड कम फ्रॉम समवेयर, राइट। कमेंट्स के लिए भी सेम चीज कि ये सर्विस रन करेगा, अगर मैं उसको डेटा दे दूं तो इसका मुझे वो आउटपुट दे देगा। ये नहीं है कि ये दोनों तीनों पे डिपेंडेंट रहेगा, बट स्टिल आप अगर एक होल एप्लीकेशंस का अगर बात करें तो ये आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए। देयर शुड बी सम लिंकेज बिटवीन दोस, बट दोस लिंकेज शुड बी सच लाइक, उस लिंकेज से आप क्या हो रहा है, आपका आपका हेल्प होगा एक दूसरे को काम कराने के लिए, क्योंकि एज अ होल आप ये तोड़े हैं, तोड़ने के बाद भी आपको तो कुछ काम करना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो पर्टिकुलर आपका एप्लीकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन होगा, ये नहीं कि कोई भी कहीं भी आके रजिस्ट्रेशन कर दे। जैसे हम फेसबुक में बोले, फेसबुक में जो रजिस्ट्रेशन करेगा उसका रजिस्ट्रेशन का अलग सर्विस है, पोस्ट का अलग सर्विस है, फेसबुक का होम पेज का अलग सर्विस है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन होगा वो और यूजर का मेरा प्रोफाइल, मेरा पोस्ट, वो सबसे तो कुछ ना कुछ लिंकेज हो रहा है। दैट लिंकेज we will create in futures। ओके, हम लोग स्लोली स्लोली सब देखेंगे कि किस तरह से हम लोग ये जो छोटे छोटा एप्लीकेशन बनाए जो स्टैंड अलोन है, अलग से अपने से काम कर रहा है, फिर ये लिंक करा करके हम लोग ये सारे को जोड़ेंगे, व्हेन इट combined everything, तब वो माइक्रो सर्विस कहलाएगा। बट राइट नाउ दिस इज 3 सेपरेट एप्लीकेशन, ये 3 अलग अलग एप्लीकेशन है जो स्टैंड अलोन रन कर रहा है। इट इज नॉट अ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर हो नो। ओके, एनी डॉट नाउ? चलिए, हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि हम लोग पहला काम करना चाह रहे हैं कि अपना प्रोजेक्ट को सेटअप करना चाह रहे हैं। तो देखिए मेरा तीनों सेटअप हो गया। आई हैव क्रिएटेड जनरेटेड द रिएक्ट ऐप, आई हैव क्रिएटेड द पोस्ट, आई हैव क्रिएटेड द कमेंट सर्विस। ओके, तो ये कमांड्स है, कमांड आप लोग को पता होगा इसलिए मैंने कमांड नहीं किया। ठीक है, अच्छा इसके साथ में 2 और चीज को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, भूल गया था, कोर्स और एक्सियोस को। सो नोड जेएस के ये 2 तो आप लोग समझ में आ गया। ठीक है, आई एम अलोन और एनीबॉडी? ओके, यू आर देयर। Yes. ओके, सो मैं क्या करता हूँ, 2 और चीज को इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, कोर्स और एक्सियोस को। Axios. एनीबॉडी नोस व्हाई ये दोनों चीज को हमने इंस्टॉल किया है? Yeah, Axios is used for fetching the data or uh, means to the server or हम्म, getting the either getting the data or providing the data to the server. That's why we use Axios. And the course is that cross origin resource sharing, where we sharing our some information from one service to the another, so there should हम्म, be means in the same origin. Otherwise, means if we don't do that, then the हम्म। spammer or any attackers can create a problem to the service Yeah, targeted. so for example, ये application is running even in my machine. This application is running on different port. Okay, so the different Yeah. port, if all things were running on the same port, then then there would not be any problem if any request come from one server to another or from Yes. post to comment. Okay, since these are coming from different places, different ports, when Yeah. React has its own port, we will provide one port to this port service and one port to this comment service. Okay, Comments. so whenever there is any communication between a Yeah. service, whether from Yeah. React to Node or from Node to Node or from Spring Boot to Node, so Yeah. if there are any cross origin, mean if their origins are different, origin mean either their IPs are different or their ports are different. Even if they are on same IPs, their Yeah. port might be different. Okay, so Yeah. in Yeah. that case, generally the server used to
just to give an extra check, like okay, whether you want to have access for this service Yeah. for from this port or not. Okay, Mm. for that we give this course. So with this course, we can restrict the usage of Yeah. our service from one origin to another origin. To another. Exactly. Exactly. And this axios was to make an HTTP call Yeah. from one service to another service. If you want to do Another. that thing, we need an HTTP client, and for that we are using axios. Okay, Yeah. okay, till here we are good. So we have done this kind of thing. Okay, now what I will do, I will inside post service, I will create two endpoint. Okay, one is create a post and other is list a post. Yeah. So I will not do this thing again. I will just copy this and then I will Yeah. explain you everything. Okay. First line, what I did, since I installed Express, Course, then Axios, those kind of thing I have installed and nodemon. So first I Yeah. include Express in Yeah. our comment section. Okay. In our Yeah. sorry, so this is our post in our post service. Okay. Then I Exactly. added this. Let me comment this also. Okay. 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 Yes, comment this. And one more thing, right now for this service, I will not use any DB for now. Slowly, I will move on with the DB. So for today's class or today and tomorrow class, we will not use any DB. Okay. So what I did, I include Express. I have create the Express constructor here, and then to create a get and post method, you used to write it like this, right? App, mean whatever name I have given this app.get, then this the URL, okay, and then our request and response, and based on that we will do this thing. So to get all post mean अभी का एजेंडा है मेरा ये दो एप्लीकेशन बनाना दो एंड Yeah. पॉइंट बनाना विद इन आवर पोस्ट सर्विस. फर्स्ट Yes. लिस्ट ऑल पोस्ट, जो हमको जितना भी पोस्ट होगा उसका लिस्ट देगा, एंड देन क्रिएट वन ऑल पोस्ट. सो मैं लिस्ट ऑल पोस्ट होगा मेरा गेट मेथड, एंड क्रिएट अ पोस्ट होगा मेरा पोस्ट मेथड. पहले हम लोग Postman. ये बना लेते हैं लिस्ट ऑल पोस्ट. लिस्ट ऑल पोस्ट के लिए मैंने इस तरह से एक एंड पॉइंट बना दिया. एनी क्वेश्चन Okay. है? मैं No, ये sir. No, sir. अच्छा मेरा ये डीबी से आएगा, बट फॉर नाउ मैं इसे इसी में ही छोड़ देता हूँ, इसी एप्लीकेशन इसी पेज में रहने देता हूँ. ये एक तरह का टेम्पररी ऑब्जेक्ट रहेगा जो बनेगा जैसे ही सर्वर रिस्टार्ट होगा, वो फिर वो इनिशियलाइज हो जाएगा जीरो से, यानी कि ब्लैंक से. ठीक है. एंड सेम फॉर सेविंग व्हाट आई विल डू, मैं वो डेटा जो भी मेरे पास आएगा मैं इसमें मैं पुश करता चला जाऊंगा. ठीक है, पुश करता चला Mm-hmm. जाऊंगा, एंड आई विल क्रिएट सम काइंड ऑफ आईडी, एक तरह का यूनिक आईडी बना लूंगा, और उसमें वो आईडी दे करके मैं इसे ऐड करता चला जाऊंगा. जैसे डेटाबेस में व्हेनेवर यू सेव एनीथिंग इट क्रिएट सम यूनिक आईडी. तो मैं यहाँ पर डेटाबेस तो नहीं बना रहा, कनेक्शन बाद में देखूंगा. तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये क्रिप्टो करके ये आपका ये डिपेंडेंसी आता है जो Mm-hmm. आपका बाय डिफॉल्ट आपके इसमें आता है, नोट के अंदर आता है. ठीक है, दैट Mm-hmm. वी कैन क्रिएट सम इस तरह का हम लोग हैश स्ट्रिंग बना Hash. लेता है. ठीक है, एक तरह का Uh-huh. आपको ऑटो जनरेटेड नंबर बता देगा जो आपका Mm-hmm. कुछ टेक्स्ट के थ्रू जो देंगे. ठीक है, कुछ सीक्रेट के Ah. थ्रू. तो आई हैव इंक्लूडेड दैट टू क्रिएट अ यूनिक आईडी फॉर माय ईच ऑफ माय पोस्ट. जब भी मैं सेव वाले को कॉल करूंगा, आई एम डूइंग नथिंग, आई एम क्रिएटिंग अ रैंडम जनरेटेड आईडी इन अ हेक्स फॉर्मेट, जो कि चार चार रैंडम स्ट्रिंग का लेकर के. ठीक है, और मैंने क्या किया, जो मुझे डेटा मिल रहा है बॉडी में Yeah. उसे Ah. लिया, और ये एक ऑब्जेक्ट बना लिया. ऑब्जेक्ट बनाया क्या, आईडी और टाइटल को लेकर के, और पोस्ट Ah. में मैं उसे सेव कर दिया. ठीक है. In. सो Ah. व्हाट इट विल डू, लेट मी शो यू one by one what I have done here. Here I have created ID. It should be a random one, something like this. Okay.
And here what I did, read data from my API post call. Okay. एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं एक तरह का मैं इस मेरा जो ये ऑब्जेक्ट था, इसमें मैं इस तरह से फिल अप कर दूंगा डेटा को। ठीक है, ये आईडी का माने हुआ, ये नाम ये लेगा, ये आपका यहाँ जो आईडी ये जो जनरेट हुआ, सॉरी, अच्छा, ये नाम जो आईडी जो आया, ये आईडी आपका जो जनरेट हुआ, ये रैंडम नंबर माने ये ऐसा बन जाएगा। ओके, और आपने जो कमेंट जो दिया था, सपोज ये आपका रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आपने जो टाइटल में जो कमेंट दिया था, मीन टाइटल में आपका पोस्ट 1 करके अगर कुछ आया आपका, तो यहाँ पर ये सेव हो जाएगा। वेरी सिंपल थिंग, ये इस तरह से सेव हुआ, और ये जो है आपका, यहाँ जब हम लोग जो पोस्ट में जब डालेंगे, ये पोस्ट में जाके वो अपेंड हो जाएगा। ठीक है, इट इज अपेंडिंग इट, ये मेरा काम कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल। ओके, एनी डॉट हियर? नो सर। नो। ओके, और हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम पिछले क्लास में आपको बता भी चुके थे कि जब भी हम लोग इसको सेव करेंगे, सेंड करेंगे, वी कैन गिव सम स्टेटस आल्सो। बाय डिफॉल्ट वो 200 लेता है, फॉर फेलियर एट 500, बट हम लोग अपना कस्टम स्टेटस सेंड कर सकते हैं, थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड ओके दिस थिंग हैपेंड। ओके, सो ये मेरा एपीआई बन गए। ठीक, मैंने यहाँ कुछ नहीं किया है, सिंपल सा है कि व्हाट आई एम डूइंग, आई एम क्रिएटिंग वन ऑब्जेक्ट। ये मेरा डेटाबेस के अंदर हो सकता है, बाद में हम लोग डेटाबेस यूज करेंगे, बट फॉर नाउ आई हैव क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट, और 2 एपीआई बनाया है। पहला एपीआई टू गेट द डेटा। अपना नेम देखिएगा, नेम आर सेम, हम लोग नेम सेम रख सकते हैं, डिफरेंट रख सकते हैं। सेम होने से ये टाइप जो होता है एपीआई टाइप गेट पोस्ट, उससे वो डिफरेंशिएट कर लेगा। ठीक है, एंड देन फॉर get post, I am just sending whatever data I have here, but in actual there should be some db call and get the data. ठीक है, get data and then it will send. For now I'm not doing those kind of things. And here what I did, to save anything, I have created some random id. Generally in database ये automatically वो कर देता है, but I have done this thing, and then I am saving, adding those data into this post ना। ओके, अब मैं जब इसको रन करूंगा, रन करने के लिए हम लोग कभी कभार एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं। लेट्स गो टू पोस्ट, ये हम पोस्ट में है ना, पोस्ट। ओके, पोस्ट हम लोग क्या करेंगे, अपना package.json में जाएंगे, जाने के बाद ये टेस्ट को हटा करके वी विल गिव सम स्क्रिप्ट में क्या लिख देंगे, स्टार्ट। सब में हम लोग स्टार्ट करके लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे nodemon, और मेरा मेन पेज का नाम है इंडेक्स, तो index.js। सो व्हाट इट विल डू, जब भी मैं ये स्क्रिप्ट को रन करूंगा, npm ये स्टार्ट को जब रन करूंगा, इट विल रन दिस स्क्रिप्ट विल डू, इट विल सर्च फॉर दिस index.js, ये index.js, और इसको रन करेगा, क्योंकि यहाँ पर ही मेरा सर्वर सारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल टाइप npm start टू रन दिस सर्विस। और अगेन जैसे मैंने पहले कहा था कि इट इज अ स्टैंड अलोन सर्विस, तो ये मेरा, अगर मैं इस कोड को उठा के कहीं भी फेंक दें पोस्ट को, इट शुड वर्क, इट विल वर्क एज इट इज। ठीक है, तो ये देखिए ये रन कर रहा है। रन करने के बाद अगर हम चेक करना चाहें तो आई कैन यूज पोस्टमैन। ओके, अच्छा, यहाँ हम कुछ और चीज दिखा दें कि क्या चीज यूज किया है। फॉर दिस आई हैव यूज द पोर्ट 4000। नेक्स्ट क्लास हम इसको इन्वायरमेंट वेरिएबल से लेना होना दिखा देंगे, बट फॉर नाउ आवर सर्विस इज रनिंग। और मैंने नोडमॉन इसलिए यूज किया कि इफ आई डू एनी चेंजेस हियर, वो ऑटोमेटिकली इसको स्टार्ट कर देगा। ठीक है,
see on bottom, you can see the server is Is that restarting again and again. yeah. So very simple service, very nothing special, कोई special काम नहीं है. तो हम लोग एक सर्विस बनाए सेम तरह से हम लोग कमेंट्स का बनाएंगे and then we will work on front end. Okay. So Sir, I have one question here. okay, tell me. Sir, since this is one microservice, so if the service is running separately, now as we know, there are some DevOps tools like Kubernetes or Docker. So do we need to because for the sake of a microservice, do we need such tools? In order to have Yes, better yes. See, why we need Docker? First of all, we have to understand that, like, what happened to the first one. Okay, let me show you one thing. Okay, suppose I am showing you tutorials with mm, this thing. Okay, with my PC. Now, what would happen? The server, the configuration which I have. yeah. Okay, one more time. Okay, Sir, you can use Thunder some client. It will be better uh, here in okay, PS Code. okay. No, It's I much I like this thing. I like this this thing. So okay, yeah. So what happened in yeah, my tutorial or when I develop my application, I am yeah. using Node version 15. Okay, and based on this Node version 15, these modules are getting downloaded. Okay, these Yes, modules are getting downloaded, and if you and this means these modules are compatible with this Node model 15, right? yes. Mean with 15 uh, this version of these dependencies are compatible. So if we Yes, don't use Docker, mean we can or we cannot. Okay, that totally depend upon the mm, architectural decision. But what the benefit of Docker is, like when we create an image from this, it will mm, create uh, uh, it will bundle this application, okay, and mm, and create an application that will run on the server by using these dependencies only. When it will yeah. install the Node.js version 18, and then it will install these dependencies only. Yes, So yes, this will make my application ir- I mean it does not have a dependencies on OS or the machine. Okay, whether yes, I can run that on Windows or Linux or Mac, yes, yes. and whether those machines have this Node version 18 or not, Yeah, that I do not have to worry. With the help of yeah, Docker, yeah, what it will do, it will install this thing with this yeah, version only, but mean on to which they have created the image. So it will work. It will run as it is running in my machine. So for that use, we are using Docker. Yeah, there are different ways of doing things, but mm, Docker help you with this. Like it will decrease the dependency or it will omit the dependencies of the machines where different developers are using. They don't have to worry about the version. Like, अरे मेरे machine में तो काम कर रहा है, but in server ये mm, नहीं कर रहा है. Right? क्यों mm, नहीं कर रहा है? Because that server may have the different Node.js version, and for mm, that different Node.js version, this dependency अभी तो ये छोटा है तो 4 दिख रहा है, but बड़ा होगा तो mm, इसमें 40 होगा, 4000 होगा, तो something might got depreciated, and due to mm, that depreciation, that may not work. But with the mean, help of Docker, आप जब कंटेनराइजेशन आप इमेज जब बना ले रहे हैं, तो mm, you are omitting those kind of problems. Okay, आप वो सब yeah. problem को आप हटा दे रहे हैं, And, तो इसलिए eh, यूज होता है. एंड अगेन वो सारा आर्किटेक्चरल डिसीजन पे डिपेंड करता है कि आपका mm, आर्किटेक्चर क्या बोल रहा है. तो चलिए हम लोग पहले exactly. स्टार्ट करते हैं. लेट मी स्टार्ट कि हम लोग पहले ये दोनों एपीआई को हिट करके देखते हैं वेदर वी आर एबल टू हिट इट और नॉट. कस्तूर, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दोस थिंग? बस तो भाई रहे रहे क्या हुए आते हैं. ओके.
सो मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मेरे बॉडी में ये टाइटल्स करके आएगा, ठीक है। तो Yes, मैं sir. पहले पोस्ट एक कॉल कर लेता हूँ, तो पहले मैं गेट कॉल कर लेता हूँ। Hmm. क्या है पोस्ट, Yes, sir. ठीक है। जब मैं गेट करता हूँ, आई विल नॉट गेट एनीथिंग, आई विल गेट अ प्लेन जेसन, ओके। अच्छा, अब इसके बाद मैं एक और प्लस कर लेता हूँ, सेम चीज, आई विल क्रिएट अ पोस्ट कॉल। मैंने कोई वैलिडेशन नहीं किया, नथिंग, ओके। Yes. जस्ट मैं शो करना चाह रहा हूँ कि हाउ इट इज, हाउ इट वर्क। कंटेंट Yes. टाइप एप्लीकेशन जेसन, ओके। और मैंने अपने हेडर में ये रॉ करके ये मैंने टाइटल, ओके। वी सी एन एरर, ओके। देखते क्या एरर है, because I intentionally want to show you this error. Okay. What error I got? Because my motto is to learn from this mistake. If we will do this mistake, we will learn this mistake. So Yes. what error? It is saying like cannot distract the property restriction property नहीं कर पा रहा request dot body as it is undefined, because see मैंने ये जो चीज दिखा है, ये करके इसको बोलते हैं distraction, ओके। जेसन से जो भी इसके साथ जो जेसन आता है, वो उसे मैच Hmm. करके इस टाइटल के साथ मैच करना चाहता है, and then it Hmm. will have that value. This thing is called Yes. distraction. So it cannot able to do that thing. क्यों? Because in Node.js or specifically on Express.js, Uh, whatever data we send, it expect that data to be a string, okay। yes. Yeah. वो सारे चीज Yes. को Yes. एज अ स्ट्रिंग समझता है कि हमको स्ट्रिंग आ रहा है। Ah. But Ah. right here, what I am doing, I am sending a JSON, because ये जो structure है, this is a JSON Hmm. structure, right? So Jason. I have to understand the server. कि भैया, you may get JSON also, you may get string, you may get JSON also. So you have to parse your request and see whether what you are getting from it headers. Whatever you Okay. are getting, you are Hmm. converting into JSON. That's why body parser No, dot no, no. JSON. Whatever. No, mean check the header, whether in header you are getting JSON or not, and then based on that make a decision and pass it into a JSON. Okay. Oh, So if you see the request, in request also, in headers also, I have given this. If I do this thing, yeah. and then if I don't tell the server, okay, I am sending you a JSON. Okay, then Hmm. also I will see, and when I will hit, I will get the same error. Okay, now it able to understand why it may have taken it. Let me see this. Okay, no, no. Sir, you Okay, have, I think, saved that means a parser thing. That's why it's giving appropriate answer. That body parser dot JSON you are using. yeah, yeah. But ideally, you in front end also you have to understand, like, okay, Yeah. in headers also you have to give your content type. Okay, if you don't give those two things, it will have Yeah. the problem. Yeah. Yeah. Sure. Type application, because here also you are telling them from the front end, like your request may have a JSON here. So Yes. this is a way in which you can give a request. Okay. So Yeah. what I did, I hit one API and then I created this thing, and let us see what happened internally. Internally, what it did, it created this thing. What happened? What happened to my title? It should be both things, right? Should have.
both. It's coming as undefined. Why? Why undefined? Oh, sorry. Check. Right. Okay, okay, okay. See that. See, this was the problem. Since I'm not telling this key what kind of content is it is not sending. It mean that uh, the parser thing is not converting it into JSON. Now I think everything will be fine. Yes. So it is not only from the back end. You have to tell it from the front end as well. So for this request, I get all the thing correctly. Let me restart this. Okay. So it make everything as blank, and when I post this, it will save this, and in my get, I can see this thing. Okay, fairly easy, and we Yes. able to understand like what we need to send in a header, and along with that, how can we tell our browser to use this thing? Okay, to use the JSON. And last thing is this course one. So once we do the inter-service communication, I will show Yeah. you like how what kind of problem we are facing and how we are resolving this. Okay, Okay. same thing I have done for the comment. So it's totally the same. So what I will do, I will not create everything from the scratch. I will just copy this thing Yeah. and I will paste it here. Yeah. And and one thing I did, I am running this on different port number 44001. Okay, and same Yeah. thing like for uh, get, say it will be comment will be something different. Mean here we will pass the ID of post के हिसाब से comment आएगा. So Yeah. for that I will pass the post ID, क्योंकि क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई मैंने पोस्ट किया आपके पोस्ट में किसी और का भी कमेंट आ जाए. इट्स नॉट लाइक दैट. आपका जो पोस्ट होगा, the comment will be for that post only, right? ये जो कमेंट आएगा, ये आई एम इन कमेंट, ये कमेंट आपका इसी माई पोस्ट के लिए ही होगा. इट नॉट दैट कि डिफरेंट पोस्ट के लिए आ जाए. सो आवर मोटो इज टू क्रिएट दिस थिंग. तो इसके लिए क्या होगा कि आई विल whenever I will hit the API, I will get a comment for the particular post only. Okay. So for this, I have to pass the comment ID as well. Okay. और उसी कमेंट आईडी के हिसाब से मैंने पैरेंट्स में जो पास किया है, उसी कमेंट आईडी के हिसाब से जो आपका ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह का कुछ जो कमेंट का आपका स्ट्रक्चर बनेगा विद ओके, ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये आईडी पास करेंगे एंड बेस्ड ऑन दिस आईडी वो डिफरेंट कमेंट लेकर के आएगा. ओके. Yes, sir. सो सेम थिंग यहाँ पर भी कुछ उतना कुछ टफ नहीं किया है. कमेंट्स आपका किसी पोस्ट के रिलेटेड होगा, कमेंट्स होगा, ठीक है. ये भी एक पोस्ट कॉल होगा. और यहाँ पे हम लोग पैरम्स में हम लोग क्या किए हैं, पैरम्स माने पैरामीटर्स में यूआरएल्स के अंदर हम लोग वो आपका ये पोस्ट आईडी सेंड कर दिए, और सेम थिंग आपका कमेंट्स आपका बॉडी के अंदर आपका कमेंट स्पेस कर दिए, ठीक है. तो ये दो चीज आपका बॉडी के अंदर आपका कंटेंट है, कंटेंट माने कमेंट्स है, और ये आपका पैरेंट्स में आपको पोस्ट आईडी मिल गया. तो इस तरह से करके हम इसको कर लिए. तो और ये मेरा दूसरा सर्विस रन हो गया. ओके. और इसको भी रन करने के लिए सेम काम करेंगे, पैकेज.json में जाएंगे
I will create one script here. स्क्रिप्ट लिखता क्यों, कॉपी कर लेता हूँ पोस्ट से, पोस्ट में गया and I will simply copy this thing. और आज का क्लास यहीं तक खत्म करते हैं, ओके। और मैं अपना कमेंट के सेल में जाता हूँ and I will start my this application as a, ओके। और इसके कोड पे क्या लिखा हो, सेम कोड है, मीन वन API टू गेट द कमेंट। अगेन इसमें पैरेंट्स में मैं URL में हिट कर रहा हूँ, पैरेंट्स माने किस तरह का होगा, लेट मी शो। जब भी मैं इसका API जब बनाऊंगा, हिट करूंगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये जो पोस्ट आईडी मिला कमेंट करने के लिए, ये पोस्ट आईडी यहाँ चला जाएगा और उसके बाद में ये मेरा कमेंट आ जाएगा। द URL विल बी लाइक दिस, ओके। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे इसको किस तरह से और इसको इवॉल्व करके किस तरह से हम लोग बना करके और फ्रंट एंड से किस तरह से हम लोग मिलाएंगे। हाँ, नो यू हैव एनी क्वेश्चन? Sorry, can you repeat? I don't have any question here. I understood. Okay. Okay. So next काम करते हैं कि जब हम लोग जब काम करते हैं, if you have done any work in your machine, then हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग पुश करते हैं। तो जो भी चेंज है मैंने इसमें ऐड कर दिया, स्टेज में चला गया, एंड देन हम लोग लिखते हैं March 16 क्लास 4, ओके। सो नेक्स्ट डे हम लोग जो हम लोग का मेन मोटो है पूरा कंप्लीट करना, वो करेंगे। एंड देन आई एम सिंकिंग माय चेंज। सो व्हाट हैपेंड, मेरा जो भी कोड था ये मार्च 16 क्लास के रिपोजिटरी में मेरा सबमिट हो गया, ठीक है। तो देखता हूँ मेरा रिपो में आया कि नहीं। जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। नाउ हमेशा हम लोग क्या करते हैं, वी विल मेक दीज आर द फीचर्स ब्रांच। हम इसको कह सकते हैं कि ये मेरा फीचर्स ब्रांच है, ठीक है, ये मेरा फीचर्स ब्रांच है। तो जब भी हम लोग कोई वर्क करेंगे तो मेरा जो मेन ब्रांच है उसमें मेरा सारा चीज सिंक होना चाहिए, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम में दूसरा डेवलपर आएगा, सपोज मैं फिरदौस एक काम कर रहा था, मैंने ये मार्च 16 में काम किया और मेरा ये फुल एप्लीकेशन है, तो ये काम तो ये तो ठीक है, लेकिन इसको हमेशा हम लोग एक जो मेन जो मेरा होगा, चाहे वो डेवलप ब्रांच हो, चाहे वो UAT हो, चाहे स्टेज हो, चाहे मेन हो, वो हमेशा उसी ब्रांच से लेंगे और उसी ब्रांच में हम लोग पुश करके कमेंट कर देंगे, ठीक है, और बाद में इसको मर्ज कर देंगे, पुल रिक्वेस्ट कर देंगे। तो इंडस्ट्री दिस काइंड ऑफ थिंग हैपन कि जब भी आप अपना फीचर्स कोई भी काम किया, आज मेरे 16 मार्च का काम किए, कंप्लीट हो गया, आई हैव टेस्टेड कि ठीक है मेरा दोनों नोट का एप्लीकेशन बन गया, आई कैन हिट द API। नाउ प्लीज मर्ज माई कोड टू द मेन ब्रांच जहाँ से मैंने कोड लिया था, या फिर जहाँ पे दूसरा का भी कोड जाके मर्ज होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो दिस ये पुल रिक्वेस्ट में देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो ये गिटहब में इस तरह का, दूसरे में क्या होता है, आपको ब्रांच भी आप फिल्टर कर सकते हैं कि किस ब्रांच से आपको पुल रिक्वेस्ट करना है, वो करके आप इस यहाँ पे अपना पुल रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑटोमेटिकली आपको शो कर रहा है, एल्स आपको न्यू में जा करके आप देख सकते थे और सारा कोड को अपना डाल करके, अगर आपका कोड देखा कि कोड मैंने जो चेंज किया है ये सारा पेज में चेंज किया, ठीक है। बड़े बड़े कंपनी में क्या होता है, या बड़े इसमें क्या होता है कि एक रिव्यूवर होता है, रिव्यूवर डाल देते हैं उन लोग का। यहाँ देखिए रिव्यूवर 0 है, सिंस मेरा ये खुद का है, तो यहाँ पर हम रिव्यूवर डाल देंगे। वो जब उसको रिव्यू करेगा देन ओनली